अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज हम स्टैंडर्ड 7th के सब्जेक्ट इंग्लिश में 2.4 पुटिंग टुगेदर अ क्लास मैगजीन इस चैप्टर में पेज नंबर 52 पर जो वर्कशॉप दी गई है उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू अ फ्रेंड, कजिन और रिलेटिव अबाउट अ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू फेस, आस्क फॉर हिज और हर एडवाइस। यहाँ पर हमें बोला गया है कि अपने फ्रेंड, कजिन और रिलेटिव को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए और उनकी राय लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डियर फ्रेंड, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम इन आवर स्कूल। आवर इंग्लिश टीचर इंसिस्ट्स दैट ऑल ऑफ द अस स्पीक एंड कन्वर्स इन इंग्लिश इन द क्लास। दो आई मेक अप माई माइंड, आई बिकम नर्वस एंड कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स। आई हैव enough knowledge of English but I feel confused while talking. Dear Amar, please help me to come out of this problem. Advise me how to speak English fluently without fear. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिविटी प्रिटी पेपर बर्ड्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग दिस प्रिटी पेपर बर्ड यूजिंग द क्लूज गिवन विद द पिक्चर्स। हमें इस क्वेश्चन में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हमें दिए गए हैं, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो इनकम्प्लीट है। हमें उन इंस्ट्रक्शंस को पिक्चर्स की मदद से कंप्लीट करना है। सबसे पहली वाली पिक्चर देखते हैं, उसके नीचे इंस्ट्रक्शन है, उसको कंप्लीट करते हैं। टेक अ पेपर, नेक्स्ट ड्रॉ अ सर्कल, नेक्स्ट कट आउट द सर्कल, नेक्स्ट fold the round paper, next cut it along the center, next take one part, next fold in the direction of the arrow, next fold again as shown, next cut as shown, next fold upward, next now form a beak, नेक्स्ट योर बर्ड इज़ रेडी। इस तरह से आप ये सभी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर सकते हो। चलिए तुलबा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन है, राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ पेपर आर्टिकल ऑफ योर चॉइस, फॉर एग्जांपल अ पिन व्हील और अ बोट और अ मास्क। यू मे फाइंड सम ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन हेयर यूजफुल। फोल्ड, टर्न, जॉइन, crease, upward, downward, upside down, right side up, middle, sides, corner, half, quarter, etc. हमें इस क्वेश्चन में अपने पसंद की कागज़ की कोई चीज़ बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए कहा गया है। तो आइए अब हम यहाँ पर हैंड पपेट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप, होल्ड द पेपर इन द पोर्ट्रेट पोजीशन, then bring the top edge down to the bottom to fold it in half. Number 2, then again fold it in half, bringing the two far ends together. Number 3, now fold your two short edges back to the middle fold, which will create 3 total folds between 4 squares. Number 4, put your fingers in one open end and your thumb in the other to operate the puppet. Number 5, decorate the puppet with tongue in the middle opening and eyes, eyebrows, ears, nostrils, etc. on the top section above the fingers, with possibly a beard, tie or scarf in the section under the thumb. And your hand puppet is ready. इस तरह से ये इंग्लिश वर्कशॉप यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।